Assalamu alaikum students. Today we are starting the yearly paper of P3. This is 9709 Winter 21 question paper 3-2. Start करते हैं जनाब. What we have in this paper. Now, question number 1. Question number 1 is find the value of x for which 3 into this, the whole equation is given. Give your answer in the form of ln A over ln B. Start कर रहे हैं जनाब. So it will be 3 in the bracket, it is 2 into 2 power minus x, which will be 2 upon 2 power x equals to 7 power x. So 3 to the 6 equals to 7 to the 14 power x. Now taking ln on both the side, so it will be x ln 14 equals to ln 6 and x equals to ln 6 upon ln 14. We have to write the question. We have to write the answer in this form. अब आप देखिए, it's a question of 4 marks and it is not a difficult part. It is a simple question of log. Question number 2. Solve the inequality. It's a question of inequality. We have to solve it. Again, first squaring both the sides. So it will be 3x minus a whole square greater than 2x plus 2a whole square. Square करने से क्या होगा? Modulus eliminate हो जाएगा. So now it is 9x squared minus 6ax plus a squared greater than 4. It will be a squared plus 2ab plus b squared. Now 9x squared minus 6ax plus a squared minus 4x squared minus 16ax minus 16a squared greater than 0. 9x squared minus 4x squared is 5x squared. Then minus 22ax minus 15a squared greater than 0. We have to find the value of x in terms of a. We have to find the value of x in terms of a. So it will be, now we are finding out the critical values by using our calculator. The two values of x are here. The first is 5 and the second one is minus 3 over 5. As we have a with x, so it means the values are 5a and minus 3 upon 5a. So final answer will be x. जो साइन inequality का लास्ट स्टेप का साइन है वो साइन आपने लगाया, smaller value here and the larger value here. This is the question of inequality. Again, a simple question of 4 marks. Total 8 marks gain कर लिया हमने. And now after that, next question, question number 3. It's a question of complex numbers. What we have in this question of complex number, सबसे पहले आपसे कहा गया, given that the complex number u equals to a plus iota b, w equals to c plus iota d. Prove that u plus w conjugate equal to the u conjugate plus w conjugate. So first, what is u? A plus iota b. What is w? C plus iota d. Add both of them. So u plus w will be a plus c and b iota plus d iota.
So it will be b plus d iota. This is, what is this? This is u plus w. This is u plus w. And after that, first calculate u conjugate. U conjugate is a minus iota b. And one more thing. This is u plus w, but we have to calculate u plus w conjugate. So u plus w conjugate will be a plus c. Change the sign of imaginary portion. So it will be b plus d iota. Now u conjugate is this. W conjugate is c minus iota d. Add both of them, u conjugate plus w conjugate. So it will be a plus c minus common. It will be b plus d iota. The both are equal proof. We have to prove that u plus w whole conjugate equals to the u conjugate plus w conjugate. This we have to prove for 2 marks. Now, in the B part, solve the equation. We have to solve this equation z plus 2 plus iota conjugate plus 2 plus iota z equals to 0. Given your answer in the form of x plus iota y, where x and y are real. So now, let z is equals to x plus iota y, a general complex number. Substitute in the equation. So it will be x plus iota y plus 2 plus iota conjugate plus 2 plus iota. And what is that? X plus iota y equals to 0. Now, the real part is x plus 2 and the imaginary part is plus y plus 1 iota. This is the imaginary part. Plus, if we multiply the both brackets, so it will be 2x plus 2 iota y plus x iota and minus y equals to 0. Why it is minus y? Because iota into iota is iota squared and iota squared is minus 1. So now, first portion is the conjugate portion. So it means it will be x plus 2 minus y plus 1 iota plus 2x minus y plus 2 iota y plus iota x equals to 0. As we have to solve the equation and the whole equation is equals to 0, so it means the real part is 0 and the imaginary part is 0. So what is the real part? The real part is x plus 2 of this equation plus 2x minus y equals to 0. So it will be 3x plus 2 equals to y. Let's say this is equation 1. And for the imaginary part, it will be minus y minus 1 plus 2y plus x equals to 0. So it will be x plus y minus 1 equals to 0. This is the imaginary part. What is the value of y from equation 1? And let's say this is equation 2. From equation 1, y equals to 3x plus 2. So x plus 3x plus 2 minus 1 equals to 0. So 4x equals to minus 1 and x equals to minus 1 upon 4. If we substitute this minus 1 upon 4 in equation 1, so you will get the value of y, which is equals to 2 minus 3 upon 4, and the value of y will be 5 upon 4. Therefore, the final answer we have to write in terms of x plus iota y.
So what is x? X is minus 1 upon 4 plus iota y. Iota is this and y is 5 upon 4. This is the final answer for this question. The question of 4 mark. Now, we are moving forward. The question of partial fraction. What we have in this question of partial fraction, सबसे पहले तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन में हमें ये देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है या इम्प्रॉपर का क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 and the degree of numerator is also 2. If the degrees are same, then it means it is a question of improper fraction. And now we have to solve it like 4x squared minus 13x plus 13 upon 2x minus 1 x minus 3 equals to. So now first subtract the degree of numerator minus degree of denominator. First subtract the degree of denominator from the degree of numerator. So it will be 2 minus 2, 0. 0 means a constant. We have to add a constant here. Then we have to start our question. So it will be like a plus 2x minus 1 plus x minus 3. Degree of denominator is 1. So here it is b. Degree of denominator of the second fraction is again 1. So here it is c. Now 4x squared minus 13x plus 13 equals to, with a it will be 2x minus 1 and x minus 3. जब b से मल्टीप्लाई होगा तो it will be b x minus 3 और जब c से मल्टीप्लाई होगा तो it will be c 2x minus 1. Now let x minus 3 equals to 0. So what is the value of x? The value of x is 3. So now, if the value of x is 3, then the left hand side will be now the left hand side will be 4 multiplied by 9 minus 13 multiplied by 3 plus 13. The left hand side is 10. The left hand side is 10. And the right hand side, a eliminated, b eliminated. The value of c will be, what is x? X is 3. So 3 to the 6. 6 minus 1, 5. The value of c is 2. Now let 2x minus 1 equals to 0. So the value of x is 1 upon 2. If the value of x is 1 upon 2, then the left hand side will be 4 multiplied by 1 upon 2 squared minus 13 multiplied by 1 upon 2 plus 13. So the answer will be 15 upon 2. So the answer is 15 upon 2. Left hand side is 15 upon 2 equals to a eliminated, c eliminated. What is b? b is 1 upon 2 minus 3. It is minus 5 upon 2. It is minus 5 upon 2. 2 and 2 cancel out. The value of b is minus 3. And at the end for a, multiply a with this and this. So you will get a term of x squared, and there is no more x squared in the whole equation. So it will be, what will be the coefficient of x squared? It will be 2a. So we can say that 2a equals to x squared, left hand side is 4. So the value of a is 2.
So these are the values of A, B, and C, which we have to calculate in this partial fraction question. Hopefully it is clear. A simple question of 5 marks. After that, question number 5. Question number 5 is a question of complex number. We have to make an Argand diagram. What we have in this diagram? First, we have to sketch a circle. Circle depends on center and radius. How can we calculate the center of the circle? Equate 7 minus 3 minus 2 iota with 0. So what is the value of z? Z equals to, sorry, z minus 3 minus 2 iota equals to 0. So z equals to 3 plus 2 iota. So this will be the center of the circle. Here it is 3 and here it is 2. This will be the center of the circle and we have to make a circle of 1. जो भी right side पर constant होगा, that will be the center of the circle. So let's say here is the circle of 1. Here is the circle of 1. 1 above, 1 below, 1 left, 1 right. Here is a complete circle. Now, after that, this is the first inequality of complex number. And now the second one, imaginary of z is greater than or equals to 2. What imaginary of z? What imaginary of z? The imaginary of z means at origin, but it is greater than or equals to 2. So it means imaginary पर हमें कहाँ आना है? 2 पर आना है और आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी. इमेजिनरी पर 2 पर आया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और आपसे क्या कहा गया? शेड करना है डायग्राम को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से ऊपर रहना है हमें और लेस देन इक्वल्स टू 1 सर्कल के अंदर रहना है. तो शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा शेडेड पोर्शन हो जाएगा. इमेजिनरी पोर्शन में ग्रेटर देन 2 रहे हम और सर्कल के अंदर रहे. तो जनाब दिस इज द आर्गन डायग्राम. अब आप देखिए 4 मार्क की आर्गन डायग्राम आपको दी गई. अ वेरी सिंपल थिंग. नाउ इन द बी पार्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z फॉर द पॉइंट इन द शेडेड रीजन. ठीक हो गया. हमें क्या करना है? हम इस डायग्राम को कॉपी करते हैं जरा. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड greatest value of angle of z. Argument of z means angle of z. Greatest value of angle of z. So now here is the diagram. Shaded portion के साथ greatest angle आपने calculate करना. How can we calculate the greatest angle? Argument of z. What is z? Z is alone here, so it means z equals to 0. Means from the origin. What is the angle? This. We have to calculate this angle. We have to calculate this angle. ये angle हमें calculate करना है. How to calculate this angle? जरा check करते हैं. I am removing this red line. And now, अब आप देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं यहां से सेंटर ऑफ द सर्कल तक, सेंटर ऑफ द सर्कल तक, और फिर यहां से एक स्ट्रेट रेडियस लेकर आता हूं इधर, तो यहां बना बच्चों 90 डिग्रीज बिकॉज टेंजेंट मेक्स 90 डिग्रीज विद रेडियस. वन मोर, अगर मैं इसको यहां से एक डॉटेड लाइन 3 तक लेकर आता हूं तो हियर अगेन इट इज ऑफ 90 डिग्रीज, हियर अगेन इट इज ऑफ 90 डिग्रीज. अब जरा देखिए वैल्यूज क्या क्या हमारे पास गिवन है. अब देखिए दिस लाइन is of 2 units because the center of the circle is at 2. This line is of 2 units. This line is of 1 unit. This line is of 1 unit. Center of the circle having coordinate 3, 2. So we are 3, 2. So we are able to calculate the length. We are able to calculate the length. Let's say this is O. Let's say the center of the circle is A. We are able to calculate the length OA. So I am calculating the length OA.
So OA length will be under root y2 minus y1 whole square. So it will be 4 plus x2 minus x1 whole square. So it will be 9 because O is 0, 0 and A is 3, 2. So if we calculate the distance between them, so it will be under root 30. So now, क्या आ गया जनाब हमारे पास? OA की लेंथ आ गई 30. अब अगर मैं एक ट्राइंगल यूज करता हूं, द ट्राइंगल दिस ट्राइंगल, here is O and let's say this is B, here is B and here is A. This is under root 13 OA and I'm calculating, let's say, angle A. This side is 2. So by using sine, we are able to calculate sine A equals to opposite over hypotenuse, which is under root 13. The angle A will be 33.7. And now I'm using another triangle, and that triangle is like this, and that triangle is like this. Wait, that triangle is like this. Here it is, let's say C. This is C, this is A, and this is O. Again, here it is under root 13, and this length is 1. I'm calculating angle B. So again, sine B equals to opposite over hypotenuse under root 13. So what is the value of B? The value of B is 16.1. Now, this angle is A and this angle is B. Therefore, the final argument of Z, maximum argument of Z is angle A plus angle B. So angle A plus angle B will be 49.8. Summation of both is 49.8. A question of 3 marks. अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखिएगा आर्गन डायग्राम बनाने के मार्क्स ज्यादा देता है. प्रीवियस पार्ट हमारा इससे कम था लेकिन वो आर्गन डायग्राम का था. दैट पार्ट इज ऑफ 4 मार्क एंड इसमें वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा है बट दिस पार्ट इज ऑफ ओनली 3 मार्क्स. आर्गन डायग्राम के ये मार्क्स काफी अच्छे देता है एग्जामिनर. Now the next question is question of trigonometry, question number 6. What we have to do in this, क्या कहा गया? Using the expansion of sine 3x plus 2x, sine 3x minus 2x, show that this. So first expand this sine 3x plus 2x. So it will be sine 3x cos 2x plus cos 3x sine 2x. Now, sine 3x minus 2x will be sine 3x cos 2x minus cos 3x sine 2x. And after that, using the expansion of this, show that half this equals to this. So now, I'm substituting half. साइन 5x की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? साइन 5x की जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन 3x plus 2x. This is left hand side, right, of the equation. Plus sin x की जगह पर लिखा जा सकता है sin 3x minus 2x. Now I'm writing the expansion of these here. So it will be sin 3x cos 2x cos 2x, wait, sin 3x cos 2x plus cos 3x sin 2x. Now plus sin 3x
cos 2x minus cos 3x sin 2x. ये हमने इसके एक्सपेंशन लिख दिए हैं यहां पर. Cancellation of these two values. So now it will be half. In the bracket it is 2 sin 3x cos 2x. 2 and 2 cancel out. Final answer is sin 3x cos 2x, which we have to prove. Now, after that, in the next part, we have to integrate this sin 3x cos 2x equals to something. Now, as we know that sin 3x cos 2x, sin 3x cos 2x, according to part 1, it is equals to, according to part 1, it is equals to sin 5x plus sin x. According to part 1, it is equals to sin 5x plus sin x. So now, first integrate sin 5x. How can we integrate sin 5x? एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए, जो कि नहीं है. तो 5 हम खुद लिखेंगे, तो बाहर क्या आएगा, -1/5. सो अच्छा, दिस इज द कंप्लीट sin 3x cos 2x किसके इक्वल है. एक बार हम फर्स्ट पार्ट दोबारा देखें. sin 3x cos 2x किसके इक्वल है, हाफ sin 5x प्लस sin x. तो हाफ भी साथ में है. हाफ को हमने यहां लिखा, हाफ यहां लिखा हुआ है. नाउ अब आप देखिए, फर्स्ट आई एम इंटीग्रेटिंग sin 5x. एंगल का डेरिवेटिव साथ में मौजूद नहीं है, खुद लिखा 5, बाहर 1/5 आया. और जब साइन को इंटीग्रेट किया तो क्या बना, माइनस कॉस 5x. तो माइनस हमने यहां लगा दिया. साइन x का तो माइनस कॉस x. दिस इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4. नाउ half is here, π/4 upper limit. So it will be by substituting upper limit π/4 at the place of x, will get -2 √2 upon 5 minus, and if we substitute the lower limit here, so it will be will get -1/5 first and then -1. Upper limit minus lower limit. So now, after calculating this, the final answer will be 1/5. Directly from the calculator, you can get the result. Sorry. Directly from the calculator, you can get the result. This we have to prove. Hopefully, the question is clear. Now, question of differential equation. What we have in the question of differential equation, here solve the differential equation obtaining an expression for y in terms of x. Okay, start करते हैं ना. All y's with dy, all x with dx. So it will be 1/y square dy equals to 4x e की power -2x dx. Integral on both the side. Integral on both the side. So now, अब आप देखिए left hand side, it will be y power -2 integral with respect to y, but the right hand side is a product of two things, x and e power -2x. 4, take 4 as common. So now, it means we have to use integration by parts here. What is u and what is v? According to late rule, the u will be x and v will be e power -2x. So u, the integral of v, dx minus differentiation of
u integral of v dx dx. Now, this one will be y power minus 1 upon minus 1 equals to 4 here. X, what is the integral of e power minus 2x? So it will be e power minus 2x upon 2 upon minus 2 minus differentiation of x is 1 and e power minus 2x integral will be e power minus 2x upon minus 2 dx close. It is minus 1 upon y equals to 4 x e power minus 2x over minus 2 and this one will be e power minus 2x का इंटीग्रल दोबारा से क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा क्या, e की पावर minus 2x upon minus 2. So it will be e power minus 2x upon 4 और जब ये 4 बाहर की तरफ आएगा तो it will be minus 1 upon 4. This is the final integration of e power minus 2x and after that minus 1 upon y equals to 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर तो इट विल बी 2x e की पावर minus 2x divided by minus 1, so minus will be here और minus e power minus 2x 4 मल्टीप्लाई हुआ. So now it is 1 upon y, अगर माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर दें तो इट विल बी 2x upon e power 2x plus 1 upon e power 2x. e power 2x अगर एलसीएम लिया जाए तो इट विल बी 1 upon y equals to e power 2x and this one will be 2x plus 1. So y is equals to e power 2x अच्छा वन मोर थिंग प्लस सी यहां पर हमने यूज नहीं किया. प्लस सी अगर हम यूज करते हैं एंड वाई को 1 रखते हैं और एक्स को 0 रखते हैं, सो एट दिस द वैल्यू ऑफ सी इज ऑल्सो 0. सो देयरफॉर alhamdulillah there is no change in the next parts. So the final answer will be y equals to e power 2x over 1 plus 2x and this is the solution of differential equation. This is the solution of differential equation. Now, after that, and it's a question of 7 marks, not a difficult question. Question number 8. What we have to do in question number 8, by first expanding this, show that whole the thing. Okay. Can I say that cos squared theta plus sin squared theta equals to 1? Yes, I can. And now, can I say that cos squared theta plus sin squared theta whole square equals to 1 square? Yes, because squaring both the side की जा सकती है. Now, I am expanding the left hand side. A square plus 2ab plus b square equals to 1. So, cos 4 theta plus sin 4 theta equals to 1 minus 2 cos 4 theta, sorry, cos square theta sin square theta, cos square theta sin square theta. अब आप देखिए, हमें मालूम है sin 2 थीटा किसके इक्वल है? 2 sin थीटा cos थीटा.
और साइन स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको 4 बना दें तो क्या हो जाएगा? 1 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन 4 ऐसे बना नहीं सकते, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दी, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 × 2 = 4। सो नाउ अब हम लिख सकते हैं 1/2 को अलग किया, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर 2 थीटा, which we have to prove. Hopefully it is also clear. Now in the second part we have to solve the equation. In the second part we have to solve the equation. क्या इक्वेशन दी गई आपको? वही इक्वेशन आपको दी गई, cos 4 theta plus sin 4 theta equals to 5/9, and we know that cos 4 theta plus sin 4 theta is equals to 1 minus 1/2 sin square 2 theta equals to 5/9. So now we can say that half sin square 2 theta equals to 1 minus 5/9. And we can also say that sin square 2 theta equals to 8/9, and sin 2 theta equals to under root 8/3 with plus minus. As now the question is of 2 theta, therefore we have to calculate the values from 0 to 360. From 0 to 360. Now, according to this, the basic angle is everywhere in the all 4 quadrants, because we have plus and minus. So what is the basic angle? Sine inverse of under root 8/3. It will be 70.5. We have to move in degrees, as the range is given in degrees. Now, what is the first angle? The first angle will be 70.5. The second angle will be 180 minus 70.5, 109.5. The third angle will be 180 plus 70.5, 250.5. And the fourth angle will be 360 minus 70.5, 289.5. So the final answers are all angles divided by 2, 35.3, 54.8, 125.3, 144.7. These are the results for part B. Again, a question of 4 marks. Now, question number 14. Oh, sorry. Question number 9. We have to prove something by the help of differentiation. Now, equation is y e power 2x minus y square e power x equals to 2. So, by using differentiation concept, on y e power 2x, we have to use product rule u, the derivative of v. So what is the derivative of e power 2x? The derivative of e power 2x will be 2 e power 2x. U, the derivative of v, plus v, the derivative of u. Derivative of y is y dash. This is the first term, differentiation of the first term, and now differentiation of the second term. U, the derivative of v, e power x is e power x, minus v, the derivative of u. It will be 2y, y dash, equals to derivative of 2 is 0. Now, this will be 2 e power 2x y plus e power 2x y dash minus e power x y square plus 2 e power x y dash equals to 0. अब हमें y dash को सब्जेक्ट बनाना है, तो y dash will be e power x y square minus 2 e power 2x y over
e power 2x plus 2 e power x y plus 2 e power x y. ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों e पावर x को, सो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 2 e पावर xy अपॉन, नीचे से भी e की पावर x को कॉमन लिया तो इट विल बी e पावर x प्लस 2y. e power x plus 2y. There's a problem of a sign here. हमने यहां पर एट दिस पॉइंट ये माइनस हमसे एक्स्ट्रा लग गया, सो ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, this is plus, so now it will be, this is minus, so now this is also minus and this is also minus. Now it is correct. Now it is correct. So y dash equals to this, right? After that, what we have in the next part? In the next part, find the exact coordinate of the point on the curve where the tangent is parallel to y-axis. Tangent is parallel to y-axis means the gradient equals to 1 upon 0 or the infinite. And what is the gradient we have calculated in the previous part? The gradient we have calculated will be y squared minus 2y e power x upon 2y minus, sorry, upon e power x minus 2y equals to 1 upon 0. Therefore, we can say that by cross multiplication, e power x minus 2y equals to 0. According to cross multiplication, this happens, and y equals to e power x upon 2. Substitute this y equals to e power x upon 2 as we have to calculate the coordinates. So substitute this y equals to e power x upon 2 in the question. And what is the question? The question is y e power 2x minus y squared e power x equals to 2. In this equation, substitute y, which is equals to e power x over 2. So it will be e power x over 2, e power 2x minus y square की जगह जब रखा जाएगा e power x over 2, तो it will be e power 2x over 4 e power x equals to 2. By taking LCM with 4, it will be e power 3x upon 2. चलें अभी पहले ऐसे लिखते हैं e power 3x upon 4 equals to 2. Now, by taking LCM with 4, it will be 2 e power 3x minus e power 3x equals to 4 to the 8, and e power 3x equals to 8, taking log on both the sides. So 3x equals to ln 8, and we can call it like 1 upon 3 ln 8. और अगर ये 1 upon 3 log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 8 की पावर में चला जाए तो x क्या हो जाएगा? ln 2. If x is ln 2, then what is y? Y will be, हम रखेंगे e power ln 2 upon 2, so it will be ln and e cancel out, 2 upon 2 is 1. The coordinates are x is equals to ln 2 and y is equals to 1. These are the coordinates for this part. Now, what is next? A question of vector, a very simple topic of your P3. With respect to the origin, the position vector of A and B are given by this and this. Find the vector equation of a line through AB. Okay, we have to calculate the vector equation.
What is the vector equation? Vector equation is, we know that r equals to direction, r equals to any fixed point plus lambda times gradient, or we can say it lambda times direction. So first calculate the direction AB. I'm calculating direction AB, which is equals to OB minus OA. OB minus OA, what is OB? It is 0, 3, 1 minus what is OA? OA is 1, 2, minus 1. So this one will be 0 minus 1, minus 1, 3 minus 2, 1, 1 plus 1, 2. This is the direction vector of line AB. Therefore, the equation will be any fixed point 1, 2, minus 1, मैंने fixed point लिया A से, plus lambda times minus 1, 1, 2. This is the equation of vector, equation of line in vector form. After that, the point C lies on the line L and is such that AC equals to 3AB. Find the position vector of AC. Oh, sorry. Find the position vector of C means we have to calculate OC. Again, a simple question, AC equals to 3AB. We can say that OC minus OA equals to 3 OB minus OA. So now OC minus OA equals to 3 OB minus 3 OA, and OC equals to 3 OB minus 2 OA. Now just substitute OB here, which is 0, 3, 1 minus 2 OA. What is OA? It is 1, 2 minus 1, and calculate OC. So therefore, what is OC? OC will be 0 minus 2 minus 2, 9 minus 4, 5, 3 plus 2, 5. This is OC. Find the position vector. Position vector OC हमने calculate कर लिया. Hopefully it is clear, not a difficult part. And after that, the question is find the possible position of position vectors of the point P on line L such that the distance, the magnitude OP, such that the magnitude OP is under root 14. The magnitude of OP is under root under root 14. अब आप देखिए हमारे पास OP लाइन, हमारे पास लाइन की इक्वेशन मौजूद है, हमारे पास लाइन की इक्वेशन मौजूद है, और लाइन की इक्वेशन क्या है? Here is the equation of the line. Here is the equation of the line. Now, if this one is the equation of the line, and on this line, we have a point called P. So, in general, क्या हम कह सकते हैं OP के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? In general, OP के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1 minus lambda, 2 plus lambda, minus 1 plus 2 lambda. In general, OP के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? ये हो गए 1 minus lambda, 2 plus lambda, minus 1 plus 2 lambda. और हमें एग्जामिनर ने कहा है इसका मैग्नीट्यूड 14 है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 14, बट लेफ्ट साइड का अंडर रूट, राइट साइड का अंडर रूट हो गया कैंसिल. अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूं 1 A स्क्वायर माइनस 2 AB
plus b squared. Here it is a squared plus 2ab plus b squared. Here it is a squared minus 2ab plus b squared equals to 40. अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ रही है, so it will be 6 lambda square minus 2 lambda minus 8 equals to 0. By using our calculator, the two values of lambda are, the first is 4 upon 3 and the second one is minus 1. Therefore ये जो लैम्डा की वैल्यूज है ना, ये P पॉइंट के ऊपर है. अगर एक लाइन है, इस पर पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P के ऊपर लैम्डा की दो वैल्यूज हैं, एक 4 अपॉन 3 और एक -1 है. तो देयरफॉर OP के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अब इक्वेशन ऑफ द लाइन में अगर हम लैम्डा की जगह 4 अपॉन 3 रखते हैं, तो मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ. 4 अपॉन 3 लैम्डा की जगह रखने के बाद कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं? -1 अपॉन 3, इट विल बी 10 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 3. एक तो कोऑर्डिनेट ये बने जब हमने 4 अपॉन 3 रखा लैम्डा को, और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या बने जब हम क्या रख रहे हैं? -1 लैम्डा की जगह पर -1. तो क्या बने? 2 1 -3. These are the two coordinates. These are the two coordinates, right? Hopefully it is clear. Now after that question number 11. Question number 11 is the equation of a curve. The equation of the curve is y equals to under root 10x. Y equals to under root 10x, and we have to express dy over dx in terms of tan. So now y equals to 10x, ये आपको दिया हुआ है. हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, dy over dx in terms of tan, and verify that dy over dx equals to 1 when x is pi by 4. So first we have to differentiate the question y equals to tan x, under root 10x. तो अब जनाब जब डिफरेंशिएट करेंगे y equals to under root 10x, तो कैसे डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा? dy over dx will be, आपको हमेशा मैंने बताया है कि रूट की डिफरेंशिएशन कैसे होती है. ओके स्टूडेंट्स, हियर नाउ डिफरेंशिएट करना है इसको, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा? tan पावर हाफ x, सो इट विल बी हाफ tan पावर माइनस हाफ x, और साथ में बेस का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. सो इट विल बी sec स्क्वायर x ओवर sec स्क्वायर x ओवर 2 अंडर रूट tan x. अच्छा, ये x क्यों लिख दिया मैंने? नाउ दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट tan x. हमें इसको इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, तो sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं जनाब? sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट tan x. तो ये जनाब हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. फिर आगे वेरीफाई भी करना है हमें कि ग्रेडियंट इक्वल टू 1 व्हेन x इज पाई बाय 4. अगर x की जगह पर हम पाई बाय 4 रखते हैं, तो ग्रेडियंट हमें प्रूफ करना है. सो dy over dx इक्वल टू पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 होता है 1, तो ऊपर क्या हुआ 2 डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 होता है 1, तो नीचे क्या बचा 2, एंड द आंसर इज 1 व्हिच वी हैव टू प्रूव. मजीद आगे आइए, क्या कहा गया? द वैल्यू ऑफ dy over dx इज आल्सो 1 एट another point on the curve where x equals to a
एज शोन इन द डायग्राम, कह रहे हैं इस जगह पर अगर टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वहां पर भी x इक्वल्स टू a की जगह पर भी ग्रेडियंट क्या होगा, 1 होगा। एज शोन द डायग्राम शो दैट t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये इस पार्ट में स्टूडेंट्स हुए थे कंफ्यूज कि यार ये हो क्या रहा है। तो देखिए आप ये किस तरीके से हमें प्रूफ करना है, इस पार्ट को चेक कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए इन्होंने कहा है tan की जगह पर सिर्फ t लिखना है। हमारा जो प्रीवियस पार्ट में ग्रेडियंट था वो क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट टी। इसको अगर हम इक्वेट करते हैं 1 से तो इट विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर equals to 2 under root t. Now squaring both the side. So 1 plus t square whole square equals to 4t. So here it will be a square plus 2ab plus b square equals to 4t. तो ये इक्वेशन क्या बनकर आई, t पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पावर 4 फोर्थ रूट इक्वेशन बनकर आई, लेकिन हमें क्यूब रूट इक्वेशन बनानी है। अब यहां पर स्टूडेंट हुए थे कंफ्यूज के व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। तो अब आप देखिए एज वी नो दैट ग्रेडियंट dy ओवर dx इक्वल्स टू 1। और ग्रेडियंट बच्चे, ग्रेडियंट क्या होता है, रेशो बिटवीन y एंड x। और रेशो बिटवीन y एंड x को हम tan भी कह सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं टेंजेंट a इक्वल्स टू 1, डी बाई डी एक्स अगर 1 है तो इट मीन्स tan a भी 1 है। और tan को तो हमने t लिखना है, सो t इक्वल्स टू 1। तो क्या हम कह सकते हैं t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पता ये चला पता ये चला दिस t माइनस वन 0 आ रहा है when the gradient is equals to 1, it means this linear factor is a factor of this fourth root equation, this quadratic equation। तो जनाब हमें क्यूबिकल फैक्टर पर आना है, इट मींस हमें पावर 4 को ड्रॉप करके पावर 3 पर लेकर आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपना अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। इसमें कैसे, हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है इस इक्वेशन का, सो t4 प्लस 0t³ प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, t माइनस 1 से हमने करना है इसको डिवाइड, क्योंकि ये फैक्टर है। सो जब t माइनस 1 से डिवाइड होगा तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे t क्यूब से। सो t क्यूब जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी t पावर 4 माइनस t³, साइन चेंज कैंसिल आउट, इट इज t³ प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। फिर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, t स्क्वायर से। सो इट विल बी t³ माइनस t स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल आउट, इट इज 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। फिर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 3t से। सो इट विल बी 3t स्क्वायर माइनस 3t, साइन चेंज कैंसिल आउट, सो इट विल बी माइनस t प्लस 1। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 1 से, तो इट विल बी माइनस t प्लस 1, खत्म। And therefore, with what we have to prove, another factor is t³ plus t squared plus 3t minus 1. This we have to prove। पावर 4 की इक्वेशन को हमने ड्रॉप करके पावर 3 पर लेकर आ गए। Hopefully it is clear। Now in the last part we have to use the iterative formula to prove this and all the things। We have to calculate the value of a correct to 2 decimal places, iteration up to 4 decimal places। A simple part, again
ए नॉट, वी डोंट हैव ए नॉट, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो ए नॉट को मैं ले रहा हूं π/4। नाउ A1 जब इसमें रखा जाएगा ए की जगह पर, सो A1 विल बी -0.3217। फिर आपने आंसर जहां जहां tan A लिखा हुआ है वहां वहां आंसर लिखकर कैलकुलेटर में सिर्फ इक्वल टू प्रेस करते जाना है। सो इट विल बी 0.2993। फिर इक्वल टू प्रेस किया, A3 इक्वल्स टू 0.2838। फिर इक्वल टू प्रेस किया तो A4 इक्वल्स टू 0.2884। Therefore, we have to stop at two decimal point. Two decimal point पर हमें रुकना है। Therefore, the final value of A is 0.29. Hopefully, it is clear. Now, next. Oh, it is finished. The complete 970932 October November 21 complete हुआ. We have started at 12:20 and we have finished at 1:20। 1 hour में हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया डिस्कशन करने के साथ। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में टाइम काफी होगा आप लोगों के पास, पैनिक की जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तो प्रैक्टिस आप लोगों की स्ट्रांग होगी तो 1 घंटे में भी देखें आपके सामने ही है, ये पेपर हमने सॉल्व कर लिया कंप्लीटली। सो अब आप लोगों ने ये पेपर खुद से सॉल्व करना है। तो देन आई विल चेक दिस पेपर कि ये आपने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ हो।